Radhaswami, page 5. कहे जब से हमने सावन याद तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा कहे जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मजनू बना राई मुझको के यार तेरा मुझको के यार तेरा मुझको के यार तेरा देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा सावन जमाल तेरा मुझको के यार
मुझको ख्याल तेरा, मुझको ख्याल तेरा, देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, हर गीत गा रही है, हर बाल बाल तेरा, हर बाल बाल तेरा, हर बाल बाल तेरा, देखा है जब से हमें सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, बंधु तुझी कहाइए अनुहार मुलाकानी, मन कमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, देखा है जब से हमने सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा, सावन जमाल तेरा। Thank महाराज जी एक छोटा सा कहानी बताते थे कि महबूब बादशाह बहुत अच्छा था और वो अपने प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए कौन दुखी है कौन कैसा है, तो जब अंधेरा होने लगता तो एक भिखारी का रूप पकड़ के या तो और कोई रूप पकड़ के शहरों में घूमता था. Sanji used to often say this story. It was about Mehboob Badshah. He was a king, and many a times he wanted to know whether all the people in his kingdom are happy and they are content. So he used to take wear different attire and go in the common places and try to find out. तो एक दिन रात 11 बज गया और वो एक रास्ते पे चला जा रहा था, बादशाह बेक बदल के था, तो उसको रास्ते में 4 चोर मिल गए. So once when he was going like that in the night, on the way he found 4 thieves. तो बादशाह पूछता है कि भाई आप लोग कौन हैं? तो चोर ने देखा कि ये भी कोई चोरी होगा, रात को अकेला घूम रहा है, मतलब कहीं चोरी के लिए वो घूमता होगा. पूछा कि तब कहते हम लोग चोर हैं और चोरी करना है के लिए जा रहे हैं. आप कौन है? तो बोला मैं भी चोरी हूँ. तो बोले अच्छा ठीक है, अब हम लोग 5 हो गए, तो किसमें क्या विशेषता है बताना चाहिए, क्या क्या गुण है? So he met the 4 thieves, and they were all roaming in the streets in the night. So those 4 thieves also saw him, and they felt that he also must be a thief because he is also roaming around aimlessly in the night. So they all met, and
then he asked them what are they doing and who are they. So they introduced themselves and said that we are four thieves and we are out to carry out a theft. And they asked him, who are you? And he also said, I am also a thief. And then they said, okay, now we are five thieves. Now we should know each other's specialization. तो बादशाह ने बोला देखना चाहिए ये लोग कैसे चोरी करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ये विचार करके वो बोला मैं भी चोर हूँ। तो बोला अच्छा क्या क्या विशेषता है, सब लोग अपना अपना विशेषता बताओ, क्या क्या गुण है आप में। तो एक कहता है कोई कोई कुत्ता भूखता होवे तो उसकी भाषा मुझे समझती है, वो क्या बोलता है। दूसरा कहता है, दूसरे पूछते आपके अंदर क्या गुण है, वो बोलता है कि ऊपर जो रस्सी फेंकते हैं ना वो अच्छा तरह से पकड़ लेता है और हम लोग आराम से चढ़ सकते हैं। तो तीसरा से पूछते तुम्हारे अंदर क्या गुण है, तो बोलते मैं दीवार में सूंघ के कहाँ पैसा वैसा धन अंदर है वो मैं पता कर सकता है। तो चौथा बोलता है कि बेगर शब्द के माने कोई आवाज हुए बगैर मैं ताला खोल देता है। तो बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। तब अब रह गया बादशाह। तो बादशाह को पूछते, चोर लोग पूछता है आपका क्या विशेषता है। तो बोलता है अगर किसी को फांसी होती हो तो मैं दाढ़ी हिला दिया तो फांसी छूट जाता है। तो बोले ये सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर हम लोग को कुछ हो गया तो ये दाढ़ी हिला देगा, हम लोग बच जाएंगे। तो ये इसको सरदार बना दिया। अब बाद में वो लोग बोला हम लोग ऐसे ऐसे एक से एक बढ़ के हैं, तो इधर उधर क्या जाना, चलो बादशाह के महल पे। So the king also felt that he should know more about all these four people. So he also said, I am also a thief. And then all of the five got together. Now, each one, they wanted to find out what is the specialization of each one. So they started telling one by one. So the first one said that I can I can understand from the barking of dogs, and I can understand their language, what they are saying. So I can understand all that. Then the second one said that I can throw a rope on any kind of wall and it will always hold fast, and we can climb any wall. They said very good. And the third one, he said that I have a special sense of smell, that I can smell money and wealth anywhere, wherever it is hidden, I can smell it out. And the fourth one said that I can open a lock without making any noise. Any kind of lock I can open. So four of them said, talked about their specialization. And now it was the time of the king. So the king said, I have a specialization that if I shake my beard, I can stop anyone from hanging. So if anyone has got an order, punishment of being hung, I can just shake my beard and he will stop. So they said, your power is the strongest, because if we all get caught tomorrow, then we'll need your power. So they made him the leader of the group. Now they set out to steal. The thing is, they felt that we are all so powerful and we have got such a kind of specialization. Then let's not go to some ordinary house. Let's go straight to the king and steal the treasury. अब वो रात को 12:30 बजे बादशाह के महल की तरफ गए, चुप चुप देख रहे हैं, पहरेदार आराम से सो रहे हैं बैठे बैठे। ये लोग दबे पांव पीछे गए महल के, और पीछे जाके उन्होंने हुक वाला रस्सी फेंका, और ऊपर नहीं, पहले एक कुत्ता भौंकने लगा बाहर का। तो वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो बोलता है आप में कोई बादशाह है, बादशाह है बोल रहा है। तो बादशाह हंस के कहता अरे क्या बात है, इधर बादशाह कहाँ से आएगा। तो बाद में दूसरे ने रस्सी, हुक वाला रस्सी फेंका, वो लग गया,
और सब लोग ऊपर चढ़े और चढ़ के जो धीरे से अंदर जाके दीवार में जहाँ कोई नहीं है वो देख रहे हैं, तो एक जगह एक अलमारी में सोने चांदी के हार बीर पड़े हुए थे। तो उन्होंने बड़े उपाय से उसको खोला, काफी मिल गए, सोने वोने का सामान धन वो सब गट्ठर बांधा और नीचे उतर गए। और बादशाह भी साथ साथ है, सब उतर के आए और जाके एक जगह उन्होंने बांटा। और फिर बादशाह उनके पीछे पीछे गया, किस किस घर में जा रहे हैं लोग, वो सब देख लिया। अब देख के फिर आके सो गए। So they decided to steal from the king only, and they went to the palace. When they went to the palace, first there was one dog barking. So they inquired, they said, "You find out what is that dog trying to say." So that person who could understand the language of the dogs, he said, "This dog is saying there is a king among us." So then Badshah, the king said, "No, all this is rubbish. You leave that. Let's go inside." So then they all went quietly at the backside. The doormen were sleeping, and they went to the backside of the palace. The other one, with his specialization, threw the rope up, and they all climbed quietly inside the palace. Once they were inside the palace, they found out where the treasure is, and the person who could open the locks, he quickly opened those locks of that treasury, and he took out, then all of them took out all the gold and silver coins and other precious things inside. And then they quietly left from that place. Now the king, he when they went out, they distributed all the whatever they had stolen, they distributed among the 5 of them. And the king then escorted everyone home, so he knew exactly who's staying where. And then he came back to his palace. तो बाद में सवेरा होते ही हल्ला हो गया कि बादशाह के महल में चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो बादशाह ने पहले पहरेदार को बुलाया, क्या हो गया, तुम लोग इतना पहरा होते हुए भी किसी ने चोर को पकड़ा नहीं? तो महाराज गलती हो गई, सो गए थे लोग। तो बाद में उन सबको जो है पहरे से निकाल दिया। और फिर बाद में बादशाह जो है पुलिस को बुला के कहता, देखो ऐसे ऐसे जगह पे चोर लोग का घर है और जाओ उनको पकड़ के लेके आओ। तो गए और चारों पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए और वो धन भी साथ में लेके आए। तो कहते महाराज देखा जब ये 11 बजे ये लगा, दरबार लगा, तो रात को जो आया था भेष बदल के वही बादशाह है। तब वो लोग आपस में बात करते, अरे कुत्ते ने बराबर बोला कि तुम्हारे में बादशाह है, बादशाह है। लेकिन हम लोग ने मजाक उड़ा दिया कि देखो आप पकड़ गए हम लोग। तो कहते बादशाह। तो बाद में बादशाह बोले ये लोग बहुत सातिर चोर है, मालूम नहीं कितने को दुख देंगे, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और 2 दिन बाद फांसी। तो बाद में लोग जेल में डाले गए और 2 दिन बाद फांसी के लिए इनको लेके गया फांसी की जगह पे। तो पूछते हैं ना आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोले बस बादशाह सामने आ जाए, उनको देख के हम लोग जाना चाहते हैं। तो बादशाह को बुलाया गया, बादशाह आए, भाई क्या बात है? महाराज हमने अपना अपना दिखाया जो गुण थे, लेकिन अब आपकी बारी है। आपने नहीं दिखाया, दाढ़ी हिलाया तो फांसी चली जाए। आप भी अब दाढ़ी हिला दो। फिर आज से फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, हम कान पकड़ते हैं, फिर हमें माफ कर दो एक बार, फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो लोगों को सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए बादशाह को भी दया आ गई। तो बोले अच्छा ठीक है, आज तो किया, आगे से ऐसा करना नहीं। उन्होंने दाढ़ी हिला दिया और सब छूट गए। So next day early morning there was a hue and cry because there was a theft in the king's palace, and everyone was searching here and there. Now
the king summoned the guards first, and he asked them how they, even though they were attending to their duties, how is it that theft like this could happen? Because he had seen them sleeping on their duty. So then he gave them punishment. He removed them from their duties, and then he called the police, and he told the police the address of all those four thieves whom he had escorted home. He said, "You catch all these four people, and all the stolen material you will get there in their houses. You bring all of that here." So accordingly, the police went to those the houses of those thieves and caught all of them and brought all the stolen material. Now, when they came to the court at 11 o'clock, the king sat on his throne and the court was in session when these four people were brought and summoned in front of the court. Then they realized that, oh, this is indeed our fifth partner is the king. That dog was right. Now, we all rubbished the dog, but he was telling the truth. So now the king felt that these people are very, very professional thieves, and tomorrow they will keep doing this and cause a lot of harm to the innocent people. So he passed a judgment that all these four should be hung, and the date was fixed that 2 days later they will be hung there. Now, when this happened, after 2 days, the people asked them, "What is your last wish before being hung?" So they said, "You please, we would like to meet the king once. So if you can kindly ask the king to meet us." So as a last wish, their wish was fulfilled, and the king went and met all four of them. Now, when the king met them, they said, "See, you were also our leader, and you have seen the proficiency of all of us. Now we want to see your proficiency. So show us if you can really move that beard and get us a remission from our punishment." So the king said, "Okay," and then they pleaded to him. They said, "We'll never do this. We beg your mercy, and if you leave us, then we will never do this again, and we will never steal. We will turn into good citizens. So you please forgive us once." So the king then felt merciful, and then he shook his beard and got them free from their punishment. तो कहते हैं ऐसे संत भी इस काल और माया के लोक में आके और जीवों को इससे छुड़ा के वो लेके जाते हैं. So that way, saints also come in this world, and they also free the people from this world and take them. तो समय बड़ा अच्छा, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए. हम आंख बंद करके सुमरन ध्यान से जुड़े. So the time is good. Let us make the most of it. Let's close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.